सो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हार्बनेट को सीखेंगे। हार्बनेट में किस तरह से हम क्यूरी फायर कर सकते हैं और किस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। मीन्स यदि हमें हार्बनेट में यदि हमें डेटाबेस से डील करना है, यदि हमारा प्रोजेक्ट हार्बनेट पर बेस्ड है, तो हम किस प्रकार से उसमें डेटाबेस से डील करेंगे और किस तरह से उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे और डेटा को इंसर्ट करेंगे और इंसर्टेड डेटा जो स्टोर होगा वो एसक्यूएल में होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इस वीडियो में। देखिए लास्ट तक आप बने रहिए तो यू विल सी दैट इट इज़ आल्सो इजी। मीन्स हार्बनेट में भी करना, मीन्स प्यूरीफायर करना, डेटा स्टोर करना, डेटा फेच करना भी इतना कठिन नहीं होता है। बट यस, इन स्प्रिंग बूट मोस्टली एनोटेशंस का यूज़ करके वो ईजी होता है। बट आज न्यू प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट का मोस्टली यूज़ होता है, बट स्टिल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में आज भी हार्बनेट क्यूरीज का रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे किस तरह से उस हार्बनेट का यूज़ करके हम किस तरह से ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं तो लेट्स सी और प्रोजेक्ट। ओके, सो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा माविन प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्या करना है, फाइल में न्यू जाके आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट माविन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट नेक्स्ट करके यू कैन सी क्रिएट ए सिंपल इसकी प्रोजेक्ट, और आप करके प्रोजेक्ट क्रिएट, मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, और उसके बाद आप pom.xml को ओपन कीजिए और उसमें आपको दो डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना है। फर्स्ट है हार्बनेट की, ठीक है, फर्स्ट हार्बनेट की डिपेंडेंसीज एंड सेकंड इज MySQL। ओके, दिस टू डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यदि कुछ एरर वगैरह आए तो आपको सबसे पहले करना है राइट क्लिक करके, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करने के बाद माविन पे जाएंगे, और माविन पे जाने के बाद हमें अपडेट प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करना है। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज है, ठीक है, 4 से अपडेट करेंगे और जितनी भी डिपेंडेंसीज वो सारी ऐड हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, आफ्टर दिस हमें ये सब कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल में, जैसे कि हम इसमें करते थे स्प्रिंग बूट में, प्रॉपर्टीज फाइल में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस से कनेक्शंस के लिए सारा कुछ लिखते थे। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, hibernate.cfg.xml फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखेंगे मीन्स रिलेटेड डेटाबेस। ओके, तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक हार्बनेट की फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो XML फाइल क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके आप न्यू में जाके, अदर में जाके आप XML सर्च कीजिए, या फिर यदि ऐसा नहीं मिले तो राइट क्लिक करके न्यू में जाकर आप फाइल क्रिएट कीजिए। ठीक है, फाइल एंड फाइल का जो टाइप है वो XML कर दिया है, तो hibernate.cfg.xml। ओके, hibernate.cfg.xml, this is the way to create a Hibernate, ओके, XML फाइल्स। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पर सर्च कीजिए कि XML की DTD किस तरह से क्रिएट करेंगे। जैसे आप सर्च करोगे ना तो आपको ये दो लाइन आपको कॉपी करना है। कौन सी, ये दो लाइन्स। ओके, जिसमें आपको वर्जन एंड DTD का दिस, ओके, DTD टाइप होगा, डॉक टाइप, तो ये आपको कॉपी कर लेना है। ओके, इसके बाद हमें अपना प्रॉपर्टीज से वन बाय वन सेट करेंगे, किस तरह से हमारा डेटाबेस क्या है, कौन सा ड्राइवर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसके लिए हम सेशन फैक्ट्री का यूज़ करेंगे टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हार्बनेट कॉन्फ़िगरेशंस का टैग बनाना है। ठीक है, तो हार्बनेट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, सो दिस इज हार्बनेट कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, एंड हार्बनेट कॉन्फ़िगरेशन के इनसाइड सेशन फैक्ट्री। After this session factory, this open and close both things. Okay, तो पहले हमने open करिए, open किया, and then we will close it. Okay, so close कैसे, this is the sign of close. So let me do this. So this is opening tag and this is closing tags. Inside this we will write the properties. Okay, so properties के इंसाइड लिखेंगे प्रॉपर्टीज का नाम एंड प्रॉपर्टीज की जो भी वैल्यूज है। वन, जैसे हम प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से स्प्रिंग बूट में करते थे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखते थे, सेम है, जस्ट यू नीड टू लिटिल डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले आपको नाम लिखना है, प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, एंड प्रॉपर्टी नेम लिखने के बाद इसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज को क्लोज करेंगे। ठीक है,
तो ये फॉर्मेट आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके लिए दिस वन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम जो करते हैं क्या लिखते हैं, ड्राइवर क्लास को लोड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, कनेक्शन डॉट ड्राइवर डॉट, ओके, कनेक्शन डॉट ड्राइवर and underscore class. So what is the class we will use? com.mysql.cj.jdbc driver. Okay, com.mysql.cj.jdbc.capital driver, capital D driver. Okay, so this is what driver class name. Okay, second properties. Okay, so because we are writing first is a driver class, second is URL. So let me write connection dot URL. And what is the URL? JDBC colon MySQL, okay, colon double slash localhost, and here we need to write the port name. Okay, so 3306 of MySQL. Okay, and after that we need to write the database name. So here if you have created a database, then you can give the name. If you not, you can create the new database. Okay, so here I'm selecting this db2. Okay, so db2 को हम लेते हैं db2 जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस ये हमने कर दिया दो चीजें। मेन चीज क्या है, ड्राइवर क्लास एंड देन यूआरएल। अब इसके बाद क्या है, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले जो करना है हमें कनेक्शन डॉट यूजर नेम एंड देन कनेक्शन डॉट पासवर्ड, कनेक्शन डॉट user name. Okay, what is the username? Root in my MySQL. Okay, and password that I set it here is root. Password is also here for me, it is root. So here I will write root as a password. Okay, now what should be the connection port size? Okay, so it is not necessary, but if you want to give the port size, you can give port size. How much port size is there? So here I am set is 1. Okay, and now we have to give the dialect, which dialect we want to use. Dialect is like a language. Okay, okay, so the next is what DDL we wanted. Okay, so DDL may be create, update. Okay, so in a create all time it will delete and create a new one. Okay, and update, in update the older one will be taken. Okay, it will not delete. Okay, so this is the two values, create or update, we can set HBM to DDL. Auto, here I am fetching auto which update. You can here write rather than update you can write create, but in create all time it will delete and then create a new tables. Okay, in MySQL in a database. Okay, so according to your need, update is mostly preferred because we don't want it to delete the database, earlier databases. Okay, so each time when we run it, it will use existing tables. Okay, here one more facility is that if we wanted to see the queries, we can see by so and underscore SQL. So by which we can see the SQL queries. Okay, it's true. If we will do this, we can see the queries in console as well. Okay, so this is true. And if we wanted the threads related, so we can set the properties like this. Name is what, Hibernate current session, context class is which type, thread type, net. Okay, so this is the our XML configurations. Okay, one more thing that we can do is mapping of our bean class. Okay, so we will create here we are using the employee. For employee we are creating the project. Okay, where we will insert the database of employee. Okay, so here we can map the class of that bean class. Okay, so right now let me create first of all bean class. Okay, so what is the name of it, employee. Okay, this is my class employee, and this is what, this is my entity class, and let me import persistent. Okay, java x persistent package, and here we will write private int id. Okay, then private
string name of employee, and private string city or address, whatever. Okay, and this is my id. Okay, so let me import it. And one more thing, so we will do auto update. Okay, so how to do it? For auto increment, we will do like this. Okay, so generate value, steady generate type, identity means all time it should be unique. Okay, so let me import it. Okay, it is done. After this, we will generate setter getter and constructors. Okay, so let me generate setter getter first. Select all and generate setter getters. Okay, after that, let me two string methods. If required, then okay. If not required, then no need to generate it. Okay, this is done. Now constructor uh, using fields. Okay, and constructor, one more constructor using superclass. Okay, from superclass. So this is done. Our bin class. Okay, this is our bin class. And in a Hibernate, let me map it here. So how can I map it? Here is mapping property is there, mapping and name of class. Okay, mapping name of class equal to here we will write, and after that we will close it. Okay, so let me choose the class. So how to do this? Copy this in package name. Okay, copy this package name and then dot the bin class. Okay, employee. So this actually here it is mapped. Okay, so this is our configurations. Hibernate .cfg.xml is done, and this is employee is done. Now we will create a class where we will use this two configurations and employee data to insert this data into the our database. Okay, in a MySQL. Okay, we will use session and factory classes as well here. Okay, so the main class is our app. Let me write a yes main class as well. So finish it, and here let me write whenever my project is start, it should print the project is start. Right, project is started. After that, session factory we will use, because session factory has a session. So okay, so in session factory we will take the session and we will use it to insert the database data, okay, into tables. Okay, so how session factory do, you need to create a configuration. Okay, dot which one session we will import? This org dot hibernate. Okay, and configurations org dot hibernate dot cfg, you can see. Okay, and after this, if you enter, you can see there is suggestions. There is suggestions is come. So which one we will use? Configure. Okay, configure, which is empty dot. Here we will use build a session factory. Build session factory, and in this way we have data factory object, and now from factory we will get the sessions. Okay, so how factory dot current get current sessions. Okay, and let me store it into a session. So session, let me make a session object equal to this. Okay, and import which one? Org dot hibernate. Okay, these three things is done by which we have get the sessions. Okay, session object. Now let me write, if a session is closed, then it should print, because we have opened the sessions. Okay, get the session. Now let me write and here I will write if our session is open or not. How we can, so our factory is open or not, our factory is closed. So how can we go? We can get this by factory dot
Okay, let me write. This is the object. So how to call method of it? Factory dot. Okay, get what? Get is closed or not. So how is closed? Dot is closed, by which we can get that this is closed or not. Okay, and okay, so now our real work means we will insert the what we wanted. We want to insert this employee data into our tables. Okay, so how to do this? First of all, let me write a employee. Okay, employee object, and then equal to new employee. Okay, and in this I can pass the data that I wanted to insert, because our ID is will auto generated. So here we will give only two fields. Okay, one is for name and another one for address. So name suppose Ram, and city suppose our Bhopal. Okay, right, and it is giving me error. Why? Because in a constructor, in a bean class, I have this constructor, but here is three methods. Okay, so what I will do, I will write another constructor using fields, and here I will choose only fields. Okay, and let me generate it. Now you can see the error goes. Okay, so let me write this what actually system dot this employee data. Okay, and let me insert it into that. So how to do that? Session dot, we will use sessions. Okay, session dot begin transaction, by which the transaction will begins. Okay, start, and then we have to use session others to save this object. Which object? Employee emp, right? And after that we need to commit the transaction. So how can we do? Session dot get transactions. First of all, we need to get the transactions, and after that commit. Okay, so by which this will be committed, means it will save to the database finally, and after that we will close it. Okay, so close. So this is all about the save this data into database. Okay, so let me run it and check in database. Here are no table, and there is no tables. Okay, not a single tables here. Okay, so let me run it. Yes, my app data. If you face any problems, you can configure the run. Okay, and then run it. So using password no, root access denied for user root localhost using password no. What is actually? Okay, so here actually we have not changed. Okay, password. Okay, so let me run it, because if single mistake can be the reason for failure or project. Okay, so you can see what actually it is our this is our query which is we wanted, because we, in a hibernate.cfg you can see here I have so SQL is true, so that's why it is coming that what actually SQL is here. Okay, which SQL, what is the query. Okay, so this is that. And in a app.java you can see first we have checked that is our factory is closed or not. So we have opened, so it is false because it is not closed. Okay, after that we have employee data in an employee object. Okay, and we have printed. So what is actually ID, because ID name and city. Okay, so it is auto generate. Let's see what is actually. Okay, and here session is begin transactions and session dot save, and you can see. Okay, so by which if we save like this. Okay, so and after committing it will look like this. Okay, city and name and values is this values. Okay, and let me open table. Okay, so you can see in my table the employee table is also created and data is also inserted. Okay, and if you will not see this table, so you can refresh it first, and then you will open this table, you will see the updated data. Okay, so in this way we can store the data into tables using Hibernate. Okay, I hope this is clear to you and you are able to understand this. If it is helpful, please subscribe to our channel
and we will see in the next video more about this. Okay, so tab tak ke liye bye, thank you so much and watching this video. Please subscribe to our channel if it is helpful and if it is clear also for you. Okay, thank you so much for watching this video.